Hello everyone, welcome to Intellect Educate Academy. And today in this session we will study some of the questions of general science. So let's get started. Okay, our first question is hemoglobin in humans has the highest affinity for which of the following gases? जो hemoglobin हमारे blood में present होता है basically उसका काम क्या होता है to bind oxygen and give that oxygen to different parts of our body. But अगर हम affinity की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस which has highest affinity to bind with hemoglobin. So आपने कभी इंसिडेंट सुने होंगे कि किसी ने अंगीठी जो है अपने घर में रखी थी and he died out of suffocation or suffocated at night. This is because carbon monoxide get released at night and due to which it binds with the hemoglobin instead of oxygen and that cause these incidents. So let's move forward. On which of the following conservation laws does rockets work? Okay, जो rockets हैं हमारे वो किस चीज के ऊपर काम करते हैं? They work on the conservation of linear momentum. And what this says कि suppose this is our rocket, this is the fuel. जब fuel नीचे को burn होता है, hot gases uh, goes through this in a very high velocity, and as an action reaction force, it pushes the rocket upwards, due to which the rocket goes at a very high speed. So the conservation of linear momentum, that is equal to m1v1 is equal to m2v2. This is mass and velocity. So velocity of gases and velocity of the rocket balances itself, and that causes the launch of a rocket. So C option. Let's talk about next question. So the phenomenon of mirage occur due to which of the following? The options are polarization of light, dispersion of light, diffraction of light, and total internal reflection. So the answer to this question is total internal reflection. And why it happen is, suppose this is your on a hot day when the gases are very hot, it cause आपने देखा होगा सड़क के ऊपर क्या होता है, कई बार दिखता है हमें कि सड़क चमक रही है. So what happens is, suppose ये आपका सूरज है और यहाँ पे एक पेड़ है. पेड़ थोड़ा ढंग से बनाते हैं. So this is the sun and ये एक पेड़ है. तो सूरज की लाइट जब इस पेड़ के ऊपर गिरती है और आगे आती है, सपोज दिस इज द रोड, तो जब ये नीचे गिरती है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये आपके आईज में चली जाती है. तो आपको दिखती कहाँ पे है? ऑल दो पेड़ तो यहाँ पे है, लेकिन आपकी जो है नजरें जो सीधी लाइन में देखती हैं तो उसको कहाँ यहाँ नीचे दिखाई देती है. So and this phenomenon is called as mirage. So this is total internal reflection. The rays of the light reflects from the road and goes to your eyes, and which causes this phenomenon. Okay, let's move to next question. So if a small raindrop falls through air, its velocity goes on increasing, its velocity goes on decreasing, its velocity goes on increasing for some time and then become constant. It falls with a constant speed for some time and then its velocity increases. So answer to this question is C option. What happens when the rain drops? For some amount of time, its velocity increases due to the force of gravity, which is pulling it downwards. But after some time, what happens is due to air resistance, the force due to gravity get balanced by the force of air resistance in the atmosphere. And so what happens is, for some time the velocity will increase, and after some time when it reaches to its terminal velocity, the velocity of the raindrop become constant, and then it after that it fall with the constant velocity. Earthquake waves are infrasonic waves, ultrasonic waves, seismic waves, या infrared waves. So earthquake cause कब होता है? When two of the tectonic plates जो आपस में टकराती हैं. So when these two plates collide with each other, the waves they produce are known as seismic waves, and due to the production of these waves ये travel करते हैं throughout the earth, और
cause the earthquake at different areas throughout the world? So the answer to this question is C option, seismic waves. So the question number 6, fat can be separated from milk in a cream separation because of cohesive forces, gravitational forces, centrifugal force or centripetal force. So क्रीम कैसे सेपरेट होती है मिल्क से, आपने देखा भी होगा. व्हाट हैपन इज देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सेंट्रीफ्यूज, जिसको हम लगाते हैं अंदर, और वो क्या करता है, जो मिल्क होता है उसको हाई वेलोसिटी के ऊपर रोटेट करता है अंदर. काफी हाई वेलोसिटी के ऊपर जब वो रोटेट होता है तो उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, और जो भी हैवी मटेरियल होता है जिसको हम क्रीम बोलते हैं वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, वो बाहर वाली साइड को आ जाता है, और जो हैवी मटेरियल नहीं होता है वो अंदर रह जाता है. सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपन इज जो हैवी हैवी मटेरियल है वो आपस में बाइंड करके एक बड़ा जो है वो क्रीम बना देता है, जिसको हम बाद में इजीली सेपरेट कर सकते हैं. तो जो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस होती है उसकी वजह से जो है मिल्क में से जो क्रीम है उसको सेपरेट किया जाता है. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड? दूध से दही कैसे बनती है? दिस there is a bacteria called as lactobacillus and it is present in milk. तो जब हम दूध को ज्यादा टाइम के लिए रख देते हैं तो what happen is वो lactobacillus जो है अपना काम करता है, और उसके बाद जो है मिल्क को जो है वो कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. तो जो lactobacillus है that is a bacteria, not a fungi, not a virus. डी ऑप्शन तो है नहीं. so bacteria is the answer. So let's move toward eighth question. Which one of the following is present in chlorophyll, which gives green color to plant leaves? So plants में जो green color आता है, we all must be knowing कि chlorophyll is the reason. अब chlorophyll में क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से chlorophyll में जो है वो green color आता है? So chlorophyll gets its green color because of the presence of magnesium. जैसे कि हमारे ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन, हमारा ब्लड रेड होता है बिकॉज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है. वैसे ही प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, बट वी गेट अवर रेड कलर बिकॉज ऑफ द आयरन दैट इज प्रेजेंट इन अवर ब्लड. इन द सेम वे द plants get its green color in chlorophyll due to the presence of magnesium in the chlorophyll. So option B is the correct option, that is magnesium. कैल्शियम जो होता है वो ह्यूमंस में इन बोन्स होता है, इसकी वजह से हमारी बोन्स वाइट भी होती है कलर में. आयरन जो है ये भी ह्यूमंस में ही होता है, ड्यू टू विच वी गेट रेड कलर ऑफ द ब्लड. एंड मैंगनीज इज जस्ट mineral that is required. So let's move to the next question. The primary source of vitamin D in human beings is citrus fruits, green vegetables, sun and yeast. So answer to this question is C option. सो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है? द नेचुरल सोर्स ऑफ दिस इज द सनलाइट. जब हम सनलाइट में जाते हैं और सनलाइट हमारी बॉडी के ऊपर फॉल करती है तो हमारी बॉडी खुद है जो विटामिन डी जो है सनलाइट की वजह से बनाती है. सिट्रस फ्रूट से हमें क्या मिलते हैं? विटामिन सी. ग्रीन वेजिटेबल से हमें देयर आर मेनी विटामिन जो मिलते हैं. देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर मेन सोर्स ऑफ विटामिन. सन से हमें जो है वो विटामिन डी मिलती है, और ईस्ट से ईस्ट इज यूज्ड टू मेक अल्कोहल or used in fermentation. So let's move to our next question. Anemia is a common health problem, especially in women. Which one of the following deficiencies is the most frequently responsible for anemia in India? Anemia is a problem which is caused when we have low hemoglobin in our blood. हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि लो ब्लड जब हमारी बॉडी में होता है, दैट स्टेट इज कॉल्ड एज एनीमिया. सो ये क्यों होती है? इट हैपेंस ड्यू टू द, मैंने आपको बताया हमारे ब्लड में आयरन होता है हीमोग्लोबिन में. जब आयरन की कमी हो जाती है हमारे ब्लड में, दैट कॉज द एनीमिया. और स्पेशली वुमेन में इसलिए होती है बिकॉज दे गोज टू अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ 28 days, so due to which there is a frequent blood loss जो कि कॉज करता है एनीमिया.
इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि रेगुलर जो है उन्हें आयरन पिल्स आती हैं या ग्रीन फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह खाने चाहिए। कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स होते हैं वेन एवर वो बोन्स जो है हमारी जो कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, ग्वेटर होता है, जो गला जो है वो सूज जाता है, दैट हैपेंस। एंड जिंक जो है दैट इज ए प्रमोटर ऑफ इम्यूनिटी। सो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। इवन इन कोविड इट वाज एडवाइज्ड कि जिंक टैबलेट्स, जिंक एंड विटामिन सी टैबलेट्स, that was advised because these two things boost our immunity. So thank you very much. That's all in this video. And for more informative videos, please subscribe to our YouTube channel and stay tuned.